Hello students, so our next topic of our chapter French Revolution is the revolution and everyday life. कैसे वहाँ पे फ्रांस में revolution हो रहे थे और उसी टाइम पे how the peoples were living their daily life. So let's start. After the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. जब Bastille पे अटैक हुआ, after the storming of Bastille, what was happened? There was an abolition of censorship. Means, do you know the meaning of censorship? Censorship is the blocking or banning of something you see, hear or read. ठीक है, जैसे आप टीवी पे कुछ देखते हो, कुछ न्यूज आ रही है, उसके अंदर बीच में कुछ एक बार क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, आपको आवाज सुनाई नहीं देती, तो उसे भी सेंसरशिप कहा जाता है. या फिर न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, पैम्पलेट्स में इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से पहले the people have to take permission from the censors. That is called censorship. कि बिना सेंसर्स के परमिशन से वो न्यूज पब्लिश नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है सेंसरशिप. तो यहाँ पे फ्रांस में भी ऐसा ही होता था. For everything publishing in the newspapers, they have to take permission from the government. But after the storming of Bastille, there was abolition of censorship. The Declaration of the Rights of Men and Citizens proclaimed freedom of speech and express to be natural right. अब पीपल्स को राइट मिल गई, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिव. अब वो फ्रीली अपनी लाइफ को जी सकते थे, स्पीच दे सकते थे, अपने जो व्यूज है उसे एक्सप्रेस कर सकते थे. न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड pictures flooded the towns of France, from where traveled rapidly into the countryside and described and discussed the events and changes taking place in France. या न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, हर चीज के अंदर कोई भी न्यूज पब्लिश हो सकती थी. जो भी कंट्री में हो रहा है वो सारे डिटेल्स लिखा जाता है. कंट्री में अगर कुछ भी न्यू होगा या कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, कोई अगर डिसीज हो रही है, तो सबके बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है ना. और हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ हम रील पब्लिश कर सकते हैं. ऐसा कोई बैन नहीं है कि ये चीज पब्लिश होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. तो ऐसा ही फ्रांस में होने लग गया. वहां पे भी अब हर चीज न्यूज पेपर में पब्लिश होने लगी और ये न्यूज पूरी कंट्री में रैपिडली फ्लड होने लगी. एंड एवरी पीपल वर डिस्कसिंग द इवेंट्स और द चेंजेस व्हिच वर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. Plays, songs and festive processions attracted large number of people, which was one way to grasp and identify with ideas such as liberty or justice. तो अब लोग मिल रहे हैं, सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं. इससे सारे पीपल अट्रैक्ट होने लगे. उनको अब थोड़ा सा ऐसे लगने लग गया कि वो फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हैं. द पीपल्स वर एंजॉयिंग देयर राइट्स. But in between this, something new happened. What was happened? There was a rise of Napoleon Bonaparte. Now again another ruler. Earlier there was a ruler. Who was a ruler? Jacobin Robespierre. After the end of Jacobin's Robespierre, there was rise of Napoleon Bonaparte. After the end of Reign of Terror, डर वाला वो टाइम, उसके एंड के बाद में डायरेक्टरी वॉज क्रिएटेड. बट डायरेक्टरी क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. आपको पहले जो टॉपिक था ना उसके अंदर डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि 5 पर्सन्स की डायरेक्टरी एस्टेब्लिश हुई थी, पर वो आपस में द पर्सन्स वर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन व्यूज, दे वर ऑलवेज फाइटिंग. सो ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यू हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इट Napoleon Bonaparte. In 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में ये पिक्चर आप देख लो. This is the picture of Napoleon Bonaparte. ये वहाँ के राजा बन गए. He was crowned. In starting, the people of France were thinking that Napoleon Bonaparte is a very good ruler because he has introduced many laws which were good for the people.
Like protection of private property was one such law. Another law was uniform system of weights and measures in whole Europe. पूरे यूरोप में उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लागू कर दिया कि अब एक तरह के वेट्स और मेजर्स यूज होंगे. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. नाउ द रिच पीपल कैन नॉट attain more property. He introduced many laws such as the protection of private property and a unique system of weight and measures provided by the decimal system. So these were the two methods or the two laws which were introduced by Napoleon Bonaparte. He conquered many neighboring countries and placed members of his family on the ground. सबसे बड़ी गलती जो नेपोलियन बोनापार्टे ने ये की कि he was always involved in wars. वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमेशा ये कोशिश होती थी कि आसपास के कंट्रीज को कॉन्कर कर ले और वो एक बहुत बड़ा रूलर बन जाए. ये इसकी सबसे बड़ी गलती. एंड प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन द ग्राउंड. ये जो उनके फैमिली मेंबर्स नेपोलियन थे ना, उन्हीं को वो मेन पोजीशंस दिया करते थे. इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज अ लीडर who would bring freedom for the people. Initially, starting में many people welcome Napoleon. बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया एज अ लिबरेटर. मतलब लिबर्टी, फ्रीडम. अब फ्रांस के पीपल को फ्रीडम मिल सकती है. एंड he was introduced many laws also. But the Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading force. लेकिन नेपोलियन आर्मी किस तरीके से देखा जाता था? ऐसे देखा जाता था जैसे ये इन्वेडिंग फोर्स है. धीरे धीरे आसपास के सारे कंट्रीज को वो इन्वेड करते जा रहे थे. He was finally defeated at Waterloo in 1850. So he was defeated when he was defeated in 1850 in the War of Waterloo. Next topic is legacy of French Revolution. The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. French Revolution में जो ideas of liberty और democratic rights के जो ideas थे, आज बहुत सारी countries ये ideas adopt कर. वहाँ पे सबसे पहले ये adopt कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में. लेकिन आज बहुत सारी countries ये ideas adopt कर रही हैं. This spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. पहले तो फ्रांस में ये स्प्रेड हुई, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रीज आल्सो दिस आइडियाज वर स्प्रेड इन 19th century and feudal system was also abolished. Many of the ideas of Napoleon Bonaparte was also adopted by our leaders also like Tipu Sultan. So this is for today. Hope that you have understood the chapter first of history, French Revolution. Thank you.